अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जैसा कि पहली लेक्चर में आपने अल्लाह की नेमतों के बारे में पढ़ा जो कि अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा की हैं, और आज हम क्लास 2 के जनरल नॉलेज के चैप्टर नंबर 1 ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी के टॉपिक गॉड मेड दिस वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में आपको पता चलेगा कि अल्लाह ने दुनिया में क्या-क्या तख्लीक किया। गॉड मेड दिस वर्ल्ड। आइए इस हवाले से एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। God made this world. खुदा ने सूरज बनाया, चमकदार गोल सूरज चमकने के लिए और हमें गर्म रखने के लिए। खुदा ने आसमान बनाया, वसीम नीला आसमान जहां बादल तैरते हैं। खुदा ने पहाड़ बनाए, दरिया और समुद्र, रंग बिरंगे फूल, छोटे और बड़े दरख्त, परिंदे, तितलियां, तैरने वाले परिंदे और मछलियां बनाई। चमकदार और छोटे हशरात जैसा कि कीड़े और मक्खियां बनाई। खुदा ने हमारी दुनिया बनाई, एक बहुत बड़ी दुनिया। खुदा ने ये सब आपके और मेरे लिए बनाया। बच्चों, मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगी जो कि उम्मीद है आप जवाब दे देंगे। अल्लाह ने दुनिया किस लिए तख्लीक की? अल्लाह ने ये दुनिया इंसानों के लिए तख्लीक की। अल्लाह ने दुनिया में क्या चीजें पैदा की? अल्लाह ने आसमान, सूरज, दरिया, जानवर और पौधे पैदा किए। इंसान को किसने पैदा किया? इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया। उम्मीद है आपको ये एनिमेटेड वीडियो देखकर अंदाजा हो गया होगा कि अल्लाह ने क्या-क्या दुनिया में बनाया इंसान के लिए। आइए एक और इस तरह की एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। In the beginning, nothing existed except for God. God created the heavens and the earth. The earth had no shape, and darkness covered the earth. The Spirit of God was there, hovering over the waters. God spoke, "Let there be light." What God said happened. God saw that the light was good, and He separated the light from the darkness. God called the light day, and He called the darkness night. Evening came, and then morning came. That was the first day. God spoke again. "Let there be an expanse between the waters to separate them." What God said happened. He made a space between the water that was on the earth and the water above the earth. God called the expanse sky. Evening came, and then morning came. That was the second day. God said, "Let the water under the sky be gathered into one place, and let the dry land appear." What God said happened. God called the dry land earth, and He called the gathered water seas. God saw that it was good. Then God said, "Let the earth make plants and trees with fruits and seeds." What God said happened. Plants and trees grew, and God saw that it was good. Evening came,
And then morning came. That was the third day. Next, God placed lights in the sky. God created the sun to shine during the day and the moon and stars to shine at night. God gave us lights to shine on the earth, to separate day from night, and to help us track time in days and years. God saw that it was good. Evening came, and then morning came. That was the fourth day. Next, God made creatures that move and swim in the water. He made birds to flap their wings and soar across the sky. God saw that it was good. God told the animals to multiply, and they filled the seas and the sky. Evening came, and then morning came. That was the fifth day. Then God made more animals, livestock, creatures that crawl, and wildlife to live on the earth. When God said it, it happened. And God saw that all of it was good. Jesus is the Lord over all of creation. The Son has always existed. The Bible says everything was created by Him and for Him, and He holds everything together. All of creation exists to bring God glory. आइए अब हम कुछ सवालात के जवाब सोचते हैं। सवालात ये हैं। आसमान को किसने तख्लीक किया? आसमान को अल्लाह ने तख्लीक किया। समंदर और दरिया किसने बनाए? अल्लाह ताला ने। पौधों को किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने। ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 2। आइए एक और इस तरह की एनिमेटेड वीडियो देखते हैं।